घंटार माराथन बैठक पर भी कौन प्रकार समाधान सूत्र बा निष्कर्ष बाहरी पारि नाही। अर्थात बिना चुक्ति रे फेरी जाइछन्ति अमेरिकार प्रतिनिधि टीम। अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी भान्स कहते आलोचना सकारात्मक होइछि किंतु आमे कौन बुझामणारे पहुंची पारिलु नाही। भल उद्देश्य नहीं आम इस्लामाबाद आसीथिलु। ईरान को आम बेस्ट ऑफर देइथिलु मात्र ईरान आमर शर्त रे राजी होइनी। यह ईरान पई खराब खबर। बिना बुझामणारे आम इस्लामाबाद फेरी जाउछु बोली भान्स कहते। तेबे ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद पई राजी होई नाही। अर्थात आलोचना सकारात्मक होइनी एभଳି किछि इंडिकेशन दैछन्ति एभଳି किछि संदेश दैछन्ति वार्ता दैछन्ति जेडी भान्स। जेडी भान्स को एभଳି प्रतिक्रिया सामना को आसीबा परे वर्तमान समय बड़ा प्रश्न होछि कि आगो को कोन हेबो। जेहेतु इस्लामाबाद बैठक पर सारा विश्वर नजर अटकीला इस्लामाबाद रे किछि निष्कर्ष बाहरिबो कि एवं युद्ध शेष पई कूटनीतिक प्रयास मध्य करा जायतिला। इस्लामाबाद रे मध्यप्राच्य युद्ध को समाप्त करबा पई पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद रे कूटनीतिक प्रयास देबे जहा कहा जाउछि विफल होछि। Whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Yeah, obviously, we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. सुनुथिले कोन कहथिले जेडी भान्स अमेरिकार उपराष्ट्रपति जेडी भान्स प्रतिक्रिया आपण शुणुले अनेबाटे तेहरान निजर सार्वभौम अधिकार उपर कौनसी प्रकार बुझामणा करिबो नाही किंबा पछगुंजा देबो नाही से कहते जड़े मुखपात्र कहते ईरान आलोचना रे विश्वास करे किंतु अमेरिका उपर भरोसा नाही तेणु अमेरिका ईरान प्रत्यक्ष आलोचना एबे भी सस्पेन्स भितर रही कह अर्थात कौन प्रकार सकारात्मक होइनी प्राथमिक पर्याय तेणु आगामी दिन में कौन रोचे अमेरिकार स्टैंड तापर नजर रोचे किंतु निज जिद रे अटल रहिला ईरान अर्थात अमेरिका जो शर्त रखी मानवाक आदौ नाराज हो ईरान परमाणु कार्यक्रम को बंद करिबो नाही बोली सफा सफा शुणाई देछि। एवं सबुठ बड़ कथा आम देखिलु इस्लामाबाद रे विश्व राजनीति रे गोटे नुआ अध्याय जेतेबेले सृष्टि होछि दीर्घ 45 वर्षर शत्रुता परे अमेरिका और ईरान मध्य सबुठ बड़ सामना सामनी आलोचना डोनाल्ड ट्रम्प सबुठ विश्वस्त अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी भान्स इस्लामाबाद रे ईरान सहित आलोचना करा जाउथिला एवं लक्ष्य करा जाउथिला कि मध्यप्राच्य रे जो भयंकर युद्ध को केमती रोकिबा एवं यार भितर आलोचना कहा जाउछि सकारात्मक होइनी एवं ईरान अमेरिका कथारे राजी होइनी
ता सहित इस्लामाबाद बैठकर गुरुत्व आम जदि बुझा 1989 मसीहा से इतिहास को फेरवा पड़ो। तेहरान में होता इस्लामिक विप्लव अमेरिका दूतावास रे बंधक संकट पर दुई देश संपर्क संपूर्ण भाव में छिन्न होता। 4 दशंधि धरी केवल धमक प्रतिबंधक परोक्ष युद्ध में लिप्त रही दुई शक्ति। 45 वर्ष पर जेडी भान्स को गस्त से अविश्वास जो पाचेरी था ताकू भांगिबार साहसिक पदक्षेप बोली विवेचना करा जाय। इस्लामाबाद उभय नेता जो गोटे टेबुल बसिले पाकिस्तान मध्यस्थतार तो ट्रम्प प्रशासन में जेडी भान्स काटी बेस भल रही। ईरान सहित आलोचना करने राष्ट्रपति ट्रम्प जेडी भान्स को ही बाछी कि जेडी भान्स प्रतिक्रिया आप शुणुते। भान्स स्पष्ट भाव में कहते आम ईरान को भल अफर देचु कि ईरान शुणिलानी। शांति आलोचना रे भाग नेबा को डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन अनेक नेता थिले किंतु तेहरान पसंद थिले केवल जेडी भान्स एवं जहाँ रिपोर्ट कहूँ ईरान नेतृत्व भान्स को एक ग्रहणीय चेहरा भाव में देखुले। तेबे किंतु सबुठारु बड़ होउची कि जेडी भान्स को पाकिस्तान पठाजिबा पछरे 3टी मुख्य रिजन रही कहीं से आरंभ युद्ध को विरोध करुले। सेकेंड पॉइंट होउची कि तांकु सामरिक स्ट्राटेजी अपेक्षा शांति प्रक्रिया अधिक रुचि थिला एवं से निज प्रशासन रीतिनीति को समालोचना करने को पछांती नहीं। तेहरान चाहूला जेडी भान्स आसतु किंतु अमेरिका शर्त राजी होइनी।